We now like to honor and felicitate Honorable Judge Supreme Court, Justice Sanjay Kishan Kaulji. We now felicitate and honor Honorable Judge Supreme Court, Honorable Justice J.K. Maheshwari ji. We now honor and felicitate Honorable Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Honorable Justice Ravi Malimat ji. We thank the Mayor for doing the honors. Thank you very much indeed, sir. And ladies and gentlemen, as is customary, we begin an auspicious occasion by lighting the ceremonial lamp and invoking the gods and goddesses and seeking their blessings. I now have the proud privilege in requesting the Honorable Vice President of India and eminent dignitaries on the dais to kindly do the honors of lighting the ceremonial lamp and formally inaugurating today's event. And ladies and gentlemen, please put your hands together on the ceremonial inauguration of the first Justice J.S. Verma Memorial Lecture. And ladies and gentlemen, it is said that the diya when lit symbolizes the sharing of energy. Each wing being lit is sharing and transforming of knowledge. We would thank our Honorable Vice President of India and our eminent dignitaries for doing the honors of formally inaugurating today's event. Thank you very much indeed, Your Excellency. Ladies and gentlemen, Shri Vivek Tankha, the Honorable Member of Parliament Rajya Sabha from Jabelpur, is not only a renowned lawyer and a political leader, but is also a commendable social activist and is a true believer in the democracy and the judiciary system. One of the youngest advocate generals of Madhya Pradesh, was also the first lawyer from Madhya Pradesh to have been appointed Additional Solicitor General of India, has always worked towards providing for the underprivileged and strives to build better infrastructure for Madhya Pradesh. Shri Vivek Tankha ji is chairman of Justice Tankha Memorial Rotary Institute for Special Children, and Justice Tankha Memorial Trust helped establish and run schools in central India which are dedicated to the upliftment of specially able children. And I now have the proud privilege in inviting Shri Vivek Tankha ji to kindly propose the welcome address and share his thoughts on the purpose today. Let's put our hands together to welcome him. It's a lazy Sunday morning. जब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने मुझे बोला कि मैं 10:30 बजे आऊंगा, तो मैंने उनसे कहा सर संडे है, वकील लोग को यहाँ लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर आज देखिए आप लोगों का जादू, खाली ये हॉल नहीं भरा है, पीछे जो होटल है वो भी भरा है, वहां लाइव स्क्रीनिंग चल रही है। पूरा मध्य प्रदेश में बार एसोसिएशंस एंड लॉ कॉलेजेस में लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है इस प्रोग्राम की। और किसके लिए? जस्टिस जीएस वर्मा, द आइकॉनिक मैन
of this place. सर 70 के दशक और 80 का दशक में वो मध्य प्रदेश के जज थे। हमको वो समय याद है जब जस्टिस वर्मा की परछाई से भी लोग डरते थे। वो इतने स्ट्रिक्ट थे और इतने मैन ऑफ सच रेक्टिट्यूड कि, और उनके फैसले उनके लिए बोलते थे। उनके फैसलों ने इस देश में जो इम्प्रिंट छोड़ी, जिसके बारे में आप लोग बताएंगे। बट लेट मी टॉक ऑफ द मैजिक ऑफ हिज एक्सेलेंसी द वाइस प्रेसिडेंट। ही इज नॉट ओनली आवर डिस्टिंग्विश्ड चीफ गेस्ट, it was very difficult at the bar, at least I found it very difficult to surpass his arguments. वो इतने अच्छे तर्क रखते थे as a lawyer that it was very difficult to surpass him. He was a very effective leader of the bar. I think he was also president of the Bar Association in Rajasthan. A very effective parliamentarian and a governor who had a constitutional presence. Sir, we wish you a very distinguished tenure as a vice president and a scholarly presence as chairman of Rajya Sabha, sir. Incidentally, ये Bar Association के function में this is the second time a vice president of India has come. 1970 or 71 में, when my father was the president of the bar, Sir Hari Singh Gaur की statue portrait had to be unveiled. And उस वक्त गोपाल स्वरूप पाठक साहब, who used to be his senior in Allahabad, he had come to unveil in a function of the Bar Association. And today, I have the privilege as his son to invite the Vice President to come and deliver Justice Verma Memorial Lecture. हमारे गवर्नर साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, वो उनका नाम और काम दोनों संवेदनशील हैं। जो उनका इम्प्रिंट है ऑन द ट्राइबल्स के लिए जो काम करते हैं, और समाव हम लोग भी करते हैं, तो वी कनेक्ट वेल। एंड उनकी जो सोच है ट्राइबल्स के लिए, और जिस प्रकार से सिकल सेल के बारे में वो चिंतित हैं, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील गवर्नर हमारे बीच में है। सर, वी वेलकम यू सर। शिवराज जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के। मैं यही कह सकता हूं कि मैंने उनकी संवेदनशीलता देखी थी जो 15 साल से हम राहत के मिशंस कर रहे हैं। उन राहत स्टैंड्स फॉर रोटरीज एक्टिव हैंड्स आर टचिंग, एंड उन मिशंस में जो हम 15 साल से कर रहे हैं, कम से कम 5 लाख मरीजों तक हम पहुंचे, 30 से 50 हजार सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स किए, और वो सब बिना शिवराज जी के हो नहीं सकते थे। पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को उस चीज के लिए सपोर्ट करता था। थैंक यू वेरी मच सर, एंड वेलकम टू यू। जस्टिस संजय किशन कौल साहब, उनका ननिहाल भी मध्य प्रदेश में है और ससुराल भी मध्य प्रदेश में है। ननिहाल तो जबलपुर में है। 60 के दशक में 1958 के बाद अपने नाना नानी के पास हर दिसंबर में वो जबलपुर आते थे, और बहुत अच्छे याद या संस्मरण है जबलपुर के, जो वो आपको खुद बताएंगे, आई एम श्योर। He had a scholarly presence as a member of the bar in Delhi High Court. And I remember there was not a single election which he didn't contest in the Bar Association. मैं जब भी पता करता था, कभी वो सेक्रेटरी की लड़ाई है, कभी ट्रेजर बन रहे हैं, कभी बार काउंसिल का चुनाव, और जीतते थे। So he is not only a good lawyer, but also had a presence in the Bar Council and Bar Association. He left deep imprints in Delhi High Court, Punjab High Court, and जो चेन्नई हाई कोर्ट में उन्होंने जादू किया, from a situation where Chennai High Court didn't work, he made it a working institution. The whole nation recognizes him for that. जस्टिस कौल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं जबलपुर।
जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी जी तो हमारे हैं। आई थिंक बाय फार द मोस्ट पॉपुलर जज इन मध्य प्रदेश टुडे। आज जहां भी जाते हैं इनके लिए वकीलों की कतार लगी रहती है। ही वॉज अ वेरी गुड मेंबर, वेरी स्कॉलरली मेंबर ऑफ द बार, और बार काउंसिल का भी इलेक्शन लड़के जीतते थे ये। बल्कि जब मैं एडवोकेट जनरल था और ये बार काउंसिल का इलेक्शन जीत के आए थे तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप इतने अच्छे वकील हैं, बार काउंसिल के लिए आप ये टाइम कहां से निकाल लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों मेरे शौक हैं। सर, वी वेलकम यू। वी हैव अ चीफ जस्टिस, जस्टिस रवि मालीमत जी। इनकी एक सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है। ही सेज देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एंड दिस इज व्हाट ही फॉलोज इन हिज लाइफ। एवरीथिंग दैट यू थिंक, व्हेन यू आर थिंकिंग वेल, आपकी सोच अच्छी है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, तो आपका गोल दूर नहीं होता। सर, वी वेलकम यू सर। क्योंकि संस्मरण अभी आप दूसरों से सुनोगे, उसके पहले मैं सबको वेलकम करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जस्टिस जैन साहब को वेलकम करता हूं, चेयरमैन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। जस्टिस लाहौटी जी को वेलकम करता हूं, जस्टिस पॉलो साहब, सभी हाईकोर्ट जजेस, फॉर्मर जजेस, सिटिंग जजेस, शील नागू साहब, सबको वेलकम करता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं यहां पर, अशोका होटल पे और पूरे प्रदेश में, और जो आपको सुन रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉ टीचर्स, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। आई ऑल्सो वेलकम मिस्टर एम एल जायसवाल। आई डोंट नो कहां बैठे हैं। ही इज द ओनली पर्सन इन जबलपुर हु वाज a classmate of Justice Verma. He is a senior advocate. ये दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते थे, एंड वर्मा जी इनको बहुत आदर सत्कार से देखा करते थे, मुझे आज भी याद है। बिफोर आई एंड, मैं एक वर्मा जी के बारे में एक संस्मरण बताना चाहूंगा, फिर बैठ जाऊंगा। वर्मा जी बहुत सख्त व्यक्ति थे, जूनियर्स उनसे कांपते थे। मैं बता रहा हूं 1979-80 की बात, जब मैं प्रोफेशन में आया। जीपी सिंह साहब, वर्मा जी, दो ऐसे व्यक्तित्व थे। एक दिन हमारे सीनियर पाठक साहब का केस उनके सामने चल रहा था। एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस थी कि सुबह के वक्त हम 10-25 पे, जब 10-20 पे जब हाई कोर्ट पहुंचते थे तो तमाम फाइलिंग के केसेस वो मुंशी सामने रखता था और मैं एज अ जूनियर दस्तखत करके फाइल कर देता था बिना पढ़े। एक उनमें से केस वर्मा जी की कोर्ट में पहुंच गया तो पाठक साहब जब खड़े हुए तो कहते हैं पाठक साहब ऑल्सो वाज द जज लेटर, कि मिस्टर पाठक, आई सी दैट योर जूनियर विवेक तनखा हैज साइंड दिस, कॉल हिम। मिस्टर विवेक तनखा कहीं दूसरे कोर्ट में बैठे थे, बहस कर रहे थे, बताएगा, दौड़ते हुए हम आए। 2 साल की प्रैक्टिस थी। ही सेड, मिस्टर तनखा, आप क्या देश बंधु चित्तरंजन दास से भी बड़े आदमी हो गए कि आपके पास टाइम नहीं है ऑफ रीडिंग व्हाट यू हैव फाइल्ड? यू सी द मिस्टेक्स दैट देयर आर इन दिस मेमो। अब मेरे पास तो कोई वर्ड्स भी नहीं थे, को मैंने पढ़ा तो नहीं था, क्योंकि वो प्रैक्टिस ये थी कि दस्तखत करके फाइल कर दो। मैंने उस दिन अपने सीनियर से बोल दिया, सर आपका केस फाइल होगा या नहीं होगा, मैं तब तक दस्तखत नहीं करूंगा जब तक मैं उसको पढ़ नहीं लूंगा। और ये बात मैं हर जूनियर लॉयर्स को बोलता हूं और ये लॉ स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जब भी कोई चीज फाइल करो, जब भी कोई चीज लिखो, पहले पढ़ो, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कम से कम ये तो ज्ञान होना चाहिए। और आखिरी में मेरे मित्र राजीव शुक्ला जी सामने बैठे हैं। मैं राजीव से ये, शुक्ला जी से बोलना चाहूंगा, आपने ग्वालियर के साथ बहुत अच्छा किया, इंदौर के साथ बहुत अच्छा किया, आप आईपीएल सब मैचेस कराते हो। हमारे जबलपुर के साथ आपने कभी वो इंसाफी नहीं की, बल्कि नाइंसाफी तो नहीं कहूंगा, जबलपुर को भी अपना लीजिए, जबलपुर में भी कुछ अच्छे मैचेस करा लीजिए। आज जबलपुर आप आए हैं।
और यहाँ पर शुभ्रा वर्मा जी भी हैं, जस्टिस वर्मा की डॉटर, वो शिवराज जी बनाएंगे। शुभ्रा जी जस्टिस वर्मा की डॉटर हैं, और ये पूरा इनिशिएटिव हम लोग ने इनके साथ मिलकर लिया है, मैंने, मनन मिश्रा जी ने और सब ने। मैं शुभ्रा जी को भी और उनके पूरे परिवार को वेलकम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। Thank you very much indeed for those kind words of welcome and for sharing with us the purpose for today. And ladies and gentlemen, it's an honor that present here with us today is Honorable Justice Ravi Malimadji. The 26th Honorable Chief Justice of Madhya Pradesh High Court has served as the Acting Chief Justice of Himachal Pradesh High Court and Uttarakhand High Court, and Judge of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Karnataka High Courts. Justice Malimat belongs to one of the most respected families of Karnataka and has always worked very effectively as the administrative judge of many districts. And ladies and gentlemen, I today have the proud privilege in inviting Honorable Justice Ravi Malimadji, the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, for his address. And ladies and gentlemen, we also have the privilege of welcoming Justice Menon and Justice Srivastava ji, sir. And over to you, sir. His Excellency, Honorable Shri Jagdeep Dhankar, Honorable Vice President of India, His Excellency Shri Mangubhai Patel, Honorable Governor of Madhya Pradesh, Honorable Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge Supreme Court of India, Honorable Justice J.K. Maheshwari, Judge Supreme Court of India, my esteemed sister and brother judges, Honorable Justice Prakash Srivastava, Chief Justice High Court of Calcutta, Justice Rajendra Menon, Chairman, Armed Forces Tribunal, the distinguished invitees today, the Registrar General and other registrars of the High Court of Madhya Pradesh, the various judicial officers, Shri Vivek Tankar, Chairman, Justice J.S. Verma Memorial Committee and Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Vijay Chaudhary, Chairman, Madhya Pradesh State Bar Council, Shri Shashank Shekhar, former Advocate General of Madhya Pradesh and Secretary, Justice J.S. Verma Memorial Committee, senior advocates, other members of the bar, ladies and gentlemen. A very good morning to everyone. It is my pleasure to be present here today at the first Justice J.S. Verma Memorial Lecture in honor of the eminent jurist, Justice Jagdish Sharan Verma. Justice J.S. Verma was born on 18 January 1933 at Satna in Madhya Pradesh. He completed his schooling at Satna and undertook his further studies at Lucknow. He obtained his LLB degree from Allahabad University. Justice Verma enrolled as an advocate in the August of 1959 at Madhya Pradesh. During his time as an advocate, he predominantly practiced civil, criminal, constitutional, taxation and revenue matters at the High Court of Madhya Pradesh. He was elevated as an additional judge of the High Court of Madhya Pradesh on 12 September 1972 and was designated a permanent judge on 2nd June 1973. Justice Verma was appointed as the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh on 27th October 1985 and as the Chief Justice on 14th June 1986. Upon being transferred, he took oath as the Chief Justice of the High Court of Rajasthan on 1st September 1986. He was elevated to the Judge of the Supreme Court on 3rd June 1989. He was appointed as the 27th Chief Justice of India on 25th March 1997, which office he held until his retirement on 18 January 1998. Justice Verma heard many matters of significant importance during his tenure. To briefly touch upon some of them,
In Nilabati Behra versus State of Orissa, the court upheld the right to seek monetary compensation for a violation of the fundamental right to life under Article 21 of the Constitution, while also stating that sovereign immunity could not be considered as a valid defense for such a violation. In S.R. Bommai versus Union of India, the scope of proclamation of emergency in Article 356 of the Constitution and that of judicial review of the President's rule was laid down by the court. In Vishaka versus State of Rajasthan, the court delved into matters of sexual harassment at the workplace for the first time and laid down guidelines for the safety of women at the workplace, popularly referred to as the Vishaka Guidelines. In T.N. Godavarman versus Union of India, the court took on the role of a conservationist of the protection of the forests. These are only but a few of the many notable judgments delivered by Justice Verma. Post his retirement, Justice Verma was appointed as the chairman of the National Human Rights Commission from 1st November 1999 until 17 January 2003. In the aftermath of the brutal gang rape at Delhi in the year 2012, Justice Verma was appointed as the chairman of the Committee for Reforms of Anti-Rape Legislations. The committee submitted a report in a record time of just a month of its commissioning. The Criminal Law Amendment Act of 2013 was promulgated upon taking into account the recommendations of the committee. Justice Verma passed away on 23rd April 2013. As we commemorate the life and work of Justice J.S. Verma today, the greatest learning that one can hope to imbibe from him is his commitment to uphold values that he believed in. He worked tirelessly to achieve the goals that he set and the causes that he espoused. The speedy preparation and submission of the Justice J.S. Verma Committee report is the latest testament to that. Justice J.S. Verma dedicated his life for the cause of justice. His work ethic served as an inspiration to many young advocates, and I do believe that I will continue to motivate many people in the days to come. Thank you. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, has always been committed to the welfare of the people of his state. And under his leadership, we saw increase in Madhya Pradesh economic growth and Madhya Pradesh becoming a power surplus state. और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे सभा को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें और जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जस्टिस जे.एस. वर्मा, जिनका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और न्याय जगत गर्व से भर जाता है। सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी स्मृति में यह व्याख्यान माला रखी है। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के सम्मानीय उपराष्ट्रपति, जो आपके परिवार से ही आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं और मध्य प्रदेश में पहली बार आए हैं। मैं केवल अपनी ओर से नहीं, केवल आपकी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तालियां जरा मध्य प्रदेश वाली वजह थोड़ी, आपका हृदय से स्वागत। हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी राज्यपाल
माननीय मंगूभाई पटेल जी, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री संजय किशन कौल जी, मध्य प्रदेश की धरती से ही जो आते हैं, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री जे माहेश्वरी जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रवि मलिमथ जी, आदरणीय विवेक तनखा जी जो चेयरमैन है जस्टिस जे.एस. वर्मा मेमोरियल कमेटी के और राज्यसभा के सांसद, आदरणीय विजय चौधरी जी, शशांक शेखर जी, इस अवसर पर कई हस्तियां यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीवास्तव जी, मेनन जी सहित अनेकों ऐसे लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। सुब्रहा वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी यहाँ स्वागत है। मित्रों, जस्टिस वर्मा जैसा मैंने प्रारंभ में बताया मध्य प्रदेश की धरती से आते थे। अब विवेक जी भी कह रहे थे वो इतने सख्त और कठोर थे कि जूनियर उनके सामने थर थर कांपते थे, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश, मैं केवल न्याय जगत की बात नहीं कह रहा। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर भारत की संसद ने क्रिमिनल लॉ में कई आवश्यक संशोधन किए थे। मित्रों, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, महिलाओं के हक में 2012 में उनकी कलम से जो अनुशंसाएं निकली, उसके लिए तो ये देश जस्टिस वर्मा का सदैव ऋणी रहेगा। जस्टिस वर्मा ने निर्भया कांड के कलंक को धोने और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इस दिशा में जो योगदान दिया है उसे ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। न्यायपालिका के क्षितिज के विस्तार में जस्टिस वर्मा जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 1912 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस तरह की घटना कभी कभी देश में घटती रहती है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे, और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में मैं केवल एक निवेदन, क्योंकि आज संयोग से न्यायपालिका भी है, विधायिका के भी कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, और कार्यपालिका के लोग भी कहीं ना कहीं भले कम संख्या में हो, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए हैं। सचमुच में हम सबके मन में एक बड़ी चिंता है। अभी अभी भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया बस में थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने अनैतिक आचरण किया। अब कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती है तो समझ में नहीं आता कि कदम और कैसे उठाए जाएं। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है, उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में, शायद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था
कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का एक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को हुई, सजा कई लोगों को, मैं समझता हूं लगभग 76 लोगों को त्वरित फैसले करते हुए, और कई फैसलों में तो कोई 62 दिन में, मतलब एक रिकॉर्ड टाइम में न्यायपालिका ने फैसले किए। लेकिन वास्तविक फांसी तो होते होते वर्षों लग जाते हैं। देखिए, जब तक इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहे, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका जिस पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है, भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है, मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और तीनों, विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ के सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस तरह के जो अपराध है उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें, इसकी कोशिश भी करेंगे। हम लोग कुछ आउट ऑफ वे जाके भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। दुष्कर्मी हैं, कहीं उसका अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ दो, डरे तो, परेशान तो, इस तरह की चीजें भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर एक बार और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि समय की सीमा है। इसलिए अंत में विनम्रता पूर्वक एक निवेदन में और करना चाहता हूं, जिसकी तरफ अब न्यायपालिका सचमुच में ध्यान दे रही है। न्याय की भाषा मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती, ये हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज भी गांव का आदमी, आज भी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 92% लोग यहां अंग्रेजी नहीं जानते। और जब वो विवेक जी अभी कह रहे थे कि जरा पढ़ के ही दस्तखत करना चाहिए, तो जो फैसला सुनता है बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है, तो उसको वकील के पास या अंग्रेजी जानने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। देश में बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार चल रहा है। और मैं दो लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा। एक श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में जाके सबसे पहले भाषण दिया था और भारत की मातृभाषा को प्रतिष्ठित किया। और दूसरे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बिना किसी झिझक के दुनिया में कहीं भी जाए अपनी भाषा में बोलते हैं और सारे देश का सीना गर्व से फूल जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि अब समय आ गया है, न्याय की भाषा मातृभाषा हो, कर्नाटक में कन्नड़ हो, तमिलनाडु में तमिल हो, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमारी राजभाषा हिंदी हो, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में एक फैसला हमने किया है, मेडिकल की पढ़ाई भी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी इस साल से हिंदी में होगी। हिंदी समर्थ है। जब दुनिया के अलग अलग देश, अब जापान में अंग्रेजी में नहीं होती, जर्मनी में अंग्रेजी में नहीं होती, रूस में रसियन में नहीं होती, तो मध्य प्रदेश या भारत में मातृभाषा या हिंदी क्यों नहीं, इस पर आप जरूर विचार करें। एक बार मैं फिर जस्टिस जे.एस. वर्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं आप, इसलिए आप सबका स्वागत हृदय से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। And ladies and gentlemen, today's occasion is graced by Honorable Justice J.K. Maheshwari ji, was elevated as the Honorable Judge of Supreme Court of India on August 31st, 2021, was born in a small town of Jora, district Morena of Madhya Pradesh. His lordship was enrolled as an advocate with the State Bar Council of Madhya Pradesh in November 1985 and practiced in civil, criminal, constitutional, service and tax matters. Was appointed as the additional judge of the High Court of Madhya Pradesh on 25th November 2005 and on 25th November 2008 appointed as the permanent judge of the Honorable Court.
and was part of various committees pertaining to betterment of administration High Court of Madhya Pradesh, and continued his good offices till 6th of October 2019. Was transferred as Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh High Court and assumed office on 7th October 2019. His Lordship was the first Chief Justice of the newly established Andhra Pradesh High Court and was transferred as Chief Justice of High Court of Sikkim on 6th of January 2021. And ladies and gentlemen, I now have the privilege in inviting His Lordship for the presidential address. Please put your hands together to welcome him. इस गरिमामय समारोह में उपस्थित माननीय राज्यपाल, माननीय उप वाइस प्रेसिडेंट महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी, कौल साहब, चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश, तनखा जी, इस मंच पर आसीन विभूतियाँ, ऑफ द डाइस मेरे भ्राता न्यायाधीश, रजिस्ट्री ऑफिसर्स, हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें कुछ मेरे संस्मरण हैं, क्योंकि मेरी लाइफ की शुरुआत जब हुई थी वकालत की, तो मैं नवंबर 85 में जब एडवोकेट बना, मैं ग्वालियर काम करता था लाहौटी साहब के साथ। मेरी पहली अपीयरेंस जस्टिस जे.एस. वर्मा साहब की वजह से हुई। जस्टिस जे.एस. वर्मा साहब 2 जनवरी 86 को ग्वालियर गए और बेंच में वो बैठे तो हमारे सीनियर ने हमसे कहा कि मैं तो वर्मा साहब की बेंच में जाऊंगा आज और बाकी बेंचों में आप देखिए। तो मुझे याद आता है कि मेरी सबसे पहली अपीयरेंस उनकी वजह से और 2 जनवरी 86 को हुई। अगर वो नहीं आते तो इतनी जल्दी किसी जूनियर को अपीयरेंस का चांस हाई कोर्ट में नहीं मिलता। दूसरी बात मुझे जब याद आती है, पूरे वीक बैठे तो 2 दिन उन्होंने क्रिमिनल अपील्स को सुना। जब वो क्रिमिनल अपील में बैठे तो कई लोग ऐसे थे कि वहाँ पर एडवोकेट्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो उन्होंने देखना शुरू किया कौन बैठा है और कौन नया लड़का बैठा है यहाँ। तो जस्सा वर्मा साहब इंग्लिश में सुनते थे, तो उन्होंने कहा इसकी इंग्लिश ठीक है, इसको खड़ा कर दो, ये ही इज द मैन, ही विल गो एंड ही विल आर्ग्यू द केस। एट 11 he assigned me one case, you come at 2:30, I will hear this case. I was shocked, क्रिमिनल साइड की अपील, मर्डर अपील, आपको बहस करने को मिल जाए। एनीवे, मैंने प्रिपेयर किया और जितना मुझसे बन सका उतनी मैंने उनके सामने बहस की। बट जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट वही आया जो तनखा साहब ने कहा, तो उसमें उन्होंने एक्विटल कर दिया। तो आई वॉज रिमेंबरिंग जस्टिस वर्मा सिंस देन। जब तनखा साहब और सुब्रा जी मेरे पास आए थे तो मैंने उनको एक अनुरोध किया कि शायद इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता। जस्टिस वर्मा साहब आज 50 वर्ष 6 महीने हुए हैं उनको, जब से वो जज बने थे, और तब आज पहली बार ये लेक्चर की शुरुआत हुई है। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कम से कम मध्य प्रदेश के 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके नाम से आपको लेक्चर प्लीज़ कराइए, और जिससे इस फ्रेटर्निटी को कम से कम प्रोत्साहन मिलेगा कि क्या हुआ। मैं आज के टॉपिक पर बहुत ब्रीफ में 1-2 बातें कहूँगा और कुछ जस्टिस वर्मा साहब की क्वालिटीज़, और उसके बाद मैं इसको विराम दूंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कुछ पंक्तियां हैं, आई विल कोट, इफ यू वुड नॉट बी फॉरगॉटन एज सून एज यू आर डेड एंड रॉटन, आइदर राइट थिंग्स वर्थ रीडिंग
or do things worth writing. This applies aptly to Justice Verma. I know Justice Verma used to go deliver lectures, and he was very fond of wherever he is going, how he can develop his society or legal fraternity. He was thinking all around for that issue. In one of his speech, when he was speaking in convocation of the Premier Law University, he said, I quote, "Remember that the legal fraternity has been at the vanguard of the freedom struggle and nation building. Therefore, the responsibility of improving the quality of the polity of the greater on the legal fraternity is more." This was his thought process. So, I can say his tenure was an embodiment of his words. He rendered judgments where nation's conscience, public interest, and principles of the constitutionalism and morality took precedence over anything else. An innovator with the judiciary, Justice Verma's judgment paved the way for expanding the horizon of the judicial intervention in the legitimate issues concerning the life, liberty of Indians. His courageous approach and integrity towards the institution was evidenced by the fact that in Supreme Court, when he was there, restatement of the values of the judicial life in a full court meeting of 7th May 1997 was adopted, and he was the first person who voluntarily given his all assets, and declaration was given. Lord Macmillan said, and I quote, "The ultimate justification of the law is to be found and can only be found in moral consideration, which we found in Justice Verma's working and his style." At this stage, I would have to say something which the Chief Minister of the state has said regarding offenses of the minor children. I would say prevention is very good, but we have to work for reformative, because the morals of the people has low down, and we have to do some activities, thereby their morals should come up, and all these activities can be stopped. I would like to refer, with respect to the topic of the today's, that what was the horizon of his working, how he expanded. I know Justice Call would elaborately say of all these things, because he is the main speaker on the topic, but I am touching the points. One of the horizon was that what is the scope of the judicial review within the Supreme Court. As referred by previous speakers, one of the judgment of Sarojini Ramaswamy of Union of India that was not referred is one of the judgment in which they have said that even in the cases where the impeachment is there, scope of judicial review is always available. In addition, you know that the S.R. Mumbai's case is the example of that. The another horizon which he has developed is that is of the safety of the woman at a workplace. And as referred my previous speakers, that one of the judgment, Vishakha judgment, and the Vishakha's guideline on that. So now this is the horizon of development. He was protector of the personal liberty. I have seen during his hearing, though he was very hard in his working, but his heart was very soft, and that answers the issues and reflected in his judgments. Justice Verma said regarding character and moral, which I was discussing, national character molds the polity
and the national character depends on the individual rectitude. Individual is the unit of influence and the change of the society. All this concerted effort, which is one of today we are doing, this is one of all of our stakeholders to act upon, and we have to work accordingly. So far as Justice Verma's further contribution is concerned, when he was the Human Rights Chairman of the in India, he interpreted what is the meaning of the human right first time. So this is one of the horizon, and the development of the human rights and all this has come thereafter. He interpreted what is the meaning of the human right, how it includes in the public health and social security as the rights of the individuals, which has been guaranteed in the Constitution of the India. He has also worked on the HIV and AIDS when he was the chairman of the Human Rights. Now, in addition, the horizon is not with respect to interpretation or only of the judgment. When he was made the member of the committee to recommend the procedural law and what should be adopted in the criminal side, you can understand the present all this criminal law with respect to the harassment of the woman, outraging of the modesty, acid attacks, human trafficking, collection of evidence, and sexual offences, how it is to be done. All these recommendations are part of his functioning. In conclusion, I will say that no man is truly great, who is great only if in his lifetime the test of greatness is the page of history. And I convey my thanks to all the organizers of this committee that they have started the page of the history, and by way of starting such a lecture in the memory of Justice J.S. Verma. Thank you very much. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for that insightful, motivating presidential address. And ladies and gentlemen, it's an honor today that the memorial lecture is being presented by the Honorable Justice, Honorable Sanjay Kishan Kaulji, the Honorable Judge, Supreme Court of India. He hails from the distinguished Tatpar Kauls of Srinagar, whose ancestry can reliably be traced back to over 500 years. His Lordship enrolled as an advocate with the Bar Council of Delhi on July 15th of the year 1982 and practiced law at the High Court of Delhi and Supreme Court of India. His Lordship was advocate on record of the Supreme Court of India from 1987 to 1999 and was designated as the senior advocate in December 1999, was appointed as the senior counsel for the Delhi High Court and the Delhi University, was on the senior panel of Union of India and served as the additional senior standing counsel for the DDA. Was elevated as the additional judge of High Court of Delhi on May 3, 2001 and was appointed as the permanent judge on May 2, 2003. Was appointed as the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court on June 1, 2013, before being sworn in as the Chief Justice of the Madras High Court on July 26, 2014. His Lordship was appointed as a Judge of the Supreme Court of India on February 2, 2017. And ladies and gentlemen, may I now invite His Lordship for the memorial lecture. Please put your hands together to welcome. His Excellency Shri Jagdeep Dhankar Ji, His Excellency Shri Mangubhai Patel, Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, Honorable Justice J.K. Maheshwari Mehrbada, Honorable Justice Ravi Malamat, Chief Justice, Mr. Vivek  Shashank Shekhar, Vijay Todri, other members on the dais,
Chief Justice, Calcutta High Court, Justice Menon, many sitting and retired judges, other eminent citizens of Jabbalpur, most importantly the teachers and the students of law, the teachers who will carve out these students for the future, and the young students who will are tomorrow's future as lawyers and judges. Ladies and gentlemen, it's a great privilege to address this gathering, particularly as the occasion is about honoring and celebrating Justice J.S. Verma, a man of the utmost probity and intellect. He imbibed an innate sense of leadership, and he displayed a remarkable commitment to our constitutional ethos. He has been described very aptly as the nation's conscience keeper, and a luminary of the Indian judiciary. He is someone that I have always looked up to. His work continues to inspire us to restore our commitment to the rule of law and work in a manner that furthers the ideals of equality. I had suggested to Mr. Tanka that I speak on the topic Justice J.S. Verma, Reimaginations of the Indian Judiciary. I say so because there is nothing constant in any system. You have to keep on innovating if you have to go on, otherwise you'll stagnate. And that's what Justice Verma did. Innovate in the legal space so that we get a better future tomorrow. The topic seemed natural enough considering the widespread social impact of Justice Verma's judgments and the judicial innovations introduced by him that we continue to rely on this date. I do not endeavor to present an appraisal of his contribution, as there is a multiplicity of writings on the subject already. Instead, I only want to contextualize some of his interventions, and I believe that is necessary to be able to present a more wholesome picture of how Justice Verma imagined our courts, our policy, and how the imagination furthered his commitment to justice, equality, and fraternity. I have always believed that our most effective judges are those who most confidently and comfortably straddle the exigencies of the present and the future. This is reflective of the inherent dynamism involved in the work of judges. First, judges must be very firmly rooted in the social milieu that they have emerged from and remain part of it. They must have an innate understanding of their contemporary realities. Second, they must be sensitive to the churn of social energies, to the new and upcoming ways of thinking that are likely to disrupt our present ways of functioning. I shall devote the rest of my address to the myriad ways in which Justice Verma was an exemplar of this dynamism. Justice Verma was one of those rare individuals whose impact went beyond the office he occupied and the times he lived in. His far-sighted contributions have proven to be a benchmark and a foundation upon which subsequent endeavors towards social justice have been launched from. His legacy persists with us to this date and enjoins us to work in ways that further our constitutional ideas. It would be apposite to begin with the most celebrated decision of them all, which is Vishaka versus State of Rajasthan. The petitioners in that case had approached the Supreme Court, claiming an increase in incidents of sexual harassment against women in workplaces across the country. They wanted the Supreme Court to be a forum which could highlight this issue, especially as it was felt that the state had been slow to respond on it. What followed is now well known. Justice Verma, speaking for the Supreme Court, evolved a set of guidelines for preventing and addressing sexual harassment in workplaces. The guidelines not only provided immediate succor for those who were vulnerable, but they also kick-started a lengthy and ongoing movement for a more comprehensive and inclusive set of guidelines for women in workplaces. The Sexual Harassment of Women at Workplaces Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013, which drew its lineage from the Vishaka guidelines, came to be passed more than a decade after this judgment.
Vishaka is now aptly recognized as a symbol of judicial innovation. The Supreme Court boldly ventured into an arena where there was lacunas left by the legislature. Here, one must also make note of Justice Verma's judgment in Nilabati Behra versus State of Orissa, a case which concerned the custodial death of a young man due to injuries inflicted upon him by the police. The court held that contravention of fundamental freedoms could give rise to a claim in public law for monetary compensation, and that the court was empowered to grant the same under Article 32 of the Constitution. For me, these two judgments highlight the creativity, fearlessness, and farsightedness in Justice Verma's understanding of Indian polity in three important ways. First, the Vishaka and Nilabati Behra judgments underline Justice Verma's view of constitutionalism not as a static idea but as a larger movement. Justice Verma recognized the revolutionary potential of the text of Article 14, 15, 19, and 21. He understood the historical necessity of constitution making. It was a way for people to feel connected to their past, to their homeland, and to each other. He knew that the Constitution as a document came into being not in a vacuum, but as a part of other revolutions in Europe, South America, and Africa. Vishaka is a realization that the role of the judiciary is not informed only by a nation's extant norms, but by the social current taking place across the world. Thus, in formulating the Vishaka guidelines, the court heavily referred to the various international conventions against sexual harassment that India was party to. By doing so, Justice Verma placed India at the confluence of global movements towards greater access to justice and equality. Today, as we reach 25th anniversary of Vishaka's judgment, it is important to take stock of the progress made and the ways to go. We must reflect upon the ways in which impact of Justice Verma's decision can be amplified. We must acknowledge that the movement for gender equality still has some ways to go. As we are aware, sexual harassment at workplace continues to be a prevailing problem. It behoves us to work towards improving the Vishaka framework in order to address the various contingencies of today's day and age. In this regard, I would like to take this opportunity to highlight a few areas where our collective energies can be directed. In the 25th year following Vishaka, the socio-economic profile of our country has changed in multiple ways. There have been further changes brought about by the COVID-19 pandemic. In that respect, we must endeavor to rework our definitions of workplaces where sexual harassment can be said to occur. For many professions today, work is no longer constrained by the four walls of a physical office. Gig economy workers at times are required to visit the homes of their clients or to be constantly on the move between multiple venues. These can leave employees vulnerable in situations where the employer may not be willing or able to protect them. There is also a separate set of challenges when employees work from home over virtual platforms. There have been incidents of sexual harassment through video calls. Thus, to meaningfully safeguard the rights enumerated by Vishaka, we must contemplate the foreseeable ways in which laws can protect workers in such scenarios. Even within our traditional understanding of a workplace, there is work to be done further. The purport of Vishaka's guideline. There are many insidious ways in which women are targeted, and when they are seen to be challenging the traditional gender norms imposed upon them, sexual discrimination becomes a tool by which social position of a woman is reinforced. It thus degrades the work environment of a woman, which was the original problem that Vishaka set out to address. The ambit of Vishaka's guideline can also be expanded to capture the variation in the experience by different groups of people. While women are most common targets, the phenomena of sexual harassment can victimize other people as well. Men
who do not conform to traditional masculine norms, people from the LGBTQ community, and gender non-conforming individuals are also targeted. The social objective of Vishaka cannot be attained if there are gaps in legal protection that create vulnerability to sexual harassment amongst the section of workers. In this regard, it is notable that Justice Verma continues to be held in high esteem by the LGBTQ community in the country. As the head of the News Broadcasting Standard Authority, he took suo motu cognizance against a program of a TV channel called Gay Culture Rampant in Hyderabad. Justice Verma observed in the program merely carried a gratuitous depiction and reportage of homosexuality among men without any underlying serious message for the society, and it violated the right to privacy of individuals with the possible alternate sexual orientation no longer considered taboo or criminal act, unquote. He also advocated for sexual assaults to be made gender neutral in his report on the amendment to the criminal law published on 23rd January 2013. Coming to the second impact of Vishaka, much like Nilabati Behra, reimagining the court as a broader public forum instead of a limited space for adjudication of disputes. This is also borne out from Justice Verma's introduction